now with this program, we are moving forward towards writing of the web services. What we have seen is like how we can consume the web services that are present into any third-party system. Okay. That part we already have completed, right? So if there is a web service with some other like third-party system, like postal pin code API, weather map API. So all of these are what? These are the web services. They were present into any third-party system. And we have explored like two different websites. We have explored two different web services for that. One was your postal pin code, and the second was like the weather map. And you have seen like how we can explore the web services at their end, and then we could ask for some parameters like and how to convert that. How to deserialize that parameters and everything because the data what you get is always in the form of JSON. So how can we deserialize that data and how can we represent that into our application in the Salesforce? So that is what we were acting as a consumer, and then what we were doing is like we were consuming some of the web services that were present onto a third-party system. So that was one of the part, and this is something called as call in. Something called as call in. Okay. Now let's understand how can we become a provider. How can we become in the Salesforce? How can we create the web services so that our application becomes a provider? Like if any other third-party system, for example, how to develop the web services inside the Salesforce. And if somebody from the external third party, if it requests, then how can we send the response in the form of JSON, right? So how can we become the provider? How can we become the provider so that somebody else could become consumer of that web service? That means how to write down, how to create the web services, right? For that, whatever is required, that HTTP methods and everything, and that we have learned in the last lecture. Let's now create a web service. So I'll be starting with this program that we are creating a RESTful web service to receive to get all of the account records. Okay, receive and get all of the account records. So let me create a program account manager service. So let's go to the developer console and let's first of all create a class. Let's first of all create a class for that. I'm creating a new class with the name account manage services. Account manager services. Okay. Now, first of all, see, always whenever you are creating a web service, just first of all create with the basic logic. What you want, we wanted this thing to be get happen. That means if somebody requests this service, if somebody requests this particular web service, he should get all of the account records, right? He should get all of the account records. So how we usually we do this, first of all, write the basic program. So if I'm about to collect all of the account record, the first thing I require is an SQL query, right? A basic SQL query to get all of the account record. And so I'm forming that. Select the ID and for example, name, for example, rating value, and for example, like, industry, and then probably like annual revenue and like, phone and like, fax, okay, and like, active status type and then active status, okay. I wanted to fetch all these values. Where? From account, from account, okay. And I wanted them to get listed out order by order by name, order by name. So from the name, it would be like in the ascending order. I wanted to make it right, and because it's going to return you multiple values, multiple records of the type account. So what we are doing is like, we are for list collection, list of account, let's say LST accounts equals to this particular, right? LST account equals to this. So I created a query for that. This is my basic program. First of all, always construct a basic program and then convert that program into your web service. So what is the first thing you required is to create the basic program. So I'm firing a query. I'm firing a query, and with this query, I'll be collecting everything inside the collection, and this is the collection I would like to return. Like
This would be the collection, a very simple program. This is the collection what I would like to return. I like to return this particular collection because in this collection I have collected everything. I've collected everything. I've collected everything from the account record, right? That is what we wanted to do. Get all of the account records. Okay. So when somebody will ask, ask this web service, this is going to return the complete list of account records. Now let's make this program as a web service. So for that, when you are making the class to be the web service, the first thing is good, like your class should have the scope as global. That is the first thing. And then the next would be like you require to make it as a REST resource. You require to make this class as a REST resource. So I'm writing a keyword over here is REST resource. Okay, REST resource, and in bracket I'm giving format which I have taught you in the yesterday. In the last class. URL mapping equals to URL mapping equals to. Here you require to give one of the name for that. For this class name is this, but I here require to give one of the nickname. So I'm giving the nickname as like accounts or account service. Accounts service. Okay. After that, one slash again and put a star over here. That is how we always we always give the name to a web service class. Okay. Now after this, you first of all require to create a method. You first of all require to create a method, and this entire code must be present inside that method. Okay. Chalo. So let's create a method. The method should again be global and static. Global and static. Okay. And like the method name, I'm giving the method name as like get all account records. Okay. This is my method. This is my method. This particular code should be present inside this method. This particular code should be present inside method. Now because this is returning, it's returning what? It's returning a complete list collection, a list of account, right? And so the return type of this method should be list of account. The return type, although it is not accepting any parameter, it's not accepting any parameter, but the return type should be list of account because that is what you are returning whenever someone calls this web service, right? So this method will going to return a list of accounts, all of the account record. Now to this method you should decide which HTTP protocol you should apply for that, right? And we have learned about different protocols: HTTP GET, HTTP POST, PUT, patch, and delete. Here you should know all this. अब ये इसका importance आता है. तो कौन सा प्रोटोकॉल मुझे अप्लाई करना है? तो it's actually GET. Because why? Because this web service, whenever this web service is going to be get called, जिसने भी इसको कॉल किया, किसी ने भी इस सर्विस को कॉल किया, what he is going to get? He is going to get the list of all of the account records. So इसका जो operation है, that is actually GET. To retrieve the records from any of the resource, from any of the object, right? Retrieve the record from any of the object. It is GET, right? And that is why I am using HTTP GET method, and that is why I am using HTTP GET. So up to this only, you require to paste it. So up to this only. This method, I am making this method as what? HTTP GET method. HTTP GET method, right? Now this method would return. This method, whenever somebody requests, it is going to get this data. It is going to get this data and return the same thing in the form of JSON format. We don't require to create the JSON for that. Don't require a JSON parser class, a JSON generator class. This is automatically going to get happened. This response will automatically going to be get converted into the form of JSON, and internally it's going to, it's going to be converted, and then the same data in the form of JSON will going to be get transferred. So it's like see, this is how it's very simple code. This is how it's a very simple code. Now let's try to execute this. So when you wanted to execute any of the web service, there will be two methods I will be teaching you: Workbench and Postman. So when I start this OAuth authentication, that time I'm going to take Postman. Right now, every web service what we are creating, we will be testing it with the Workbench tool. Okay.
we'll be testing this with the workbench too. But I already have written here what's the testing process. So by using the workbench, this is the URL, and here you require to enter everything. Let me show you that as well. So this is the web service what I have created with the name called as account services, and I wanted to test this. So I'm opening the workbench. I'm opening the workbench. This is the URL workbench.developerforce.com, and to where we wanted to get login, because we are working on this developer edition. By the way, developer edition is a production environment, so you require to log in into the production. You are not working on to sandbox, you are working on to production directly. So log in with the Salesforce, and it will going to take the credentials from here, batch 201, whichever you are logged in, whichever sales, onto this URL, whichever you have logged in, that is going to take the credentials of that. First time it will prompt you that this is going to take the login credential, and that उसके बाद directly ये हमेशा login होता है, ठीक है. Now after this, once you have come into this, so where do you require to go? So let's go to this utilities. Okay, let's first of all go to the utilities. There you have something called as REST Explorer. Okay, there you have something called as, one option is over there is drop down is REST Explorer. Now click on this REST Explorer. It will give you what the method you wanted to test. So I created this code with which method? HTTP GET method. This code responds to GET. Okay, and that's why I'm selecting this method GET. For the post, it will be like post, put, fast. So we have every methods. We have every methods over here. The present web service what I have created, the method name is get. The method name is get. And then what you require to do over here. Okay, what you require to do over here is like just delete this two. Just delete this two. After service, the data and API version, just delete. And just keep the services as it is. Here you require to type Apex REST. Apex REST. And after that, you require to give the name. After that, you require to give the name of your web service. So the web service class what I gave in the URL mapping, I have given the name as account service. So I'm actually typing this account service. And see this I have written in the testing. So and after services, you require to write on Apex REST, and then your account service, the method name would be get. So once you have done with this, just execute it. Just execute this code. Okay. Just execute. So see, all of the account records, have been listed up. These all are the account records. If you wanted to see the details of anything, just click on that. Right? Just click on that. So you are going to get the details of everything. Details of everything. Athena. These are what this you have asked in the query: ID, name, industry, phone, fax, type, and active status. So your query: ID, name, rating, industry, annual revenue, fax. This is what. Right? These all parameters you have asked. So all of the account record, all of the records of the account have been explored. Have been transferred from the Salesforce, that third party system. So this is how we can test the web services from the workbench platform. Right? So let's move on to some other programs as well. So that create a RESTful web service. Get all of the new cases rather, all of the new cases. From the case object, we wanted to fetch the record, but precisely only those cases that the status is new. The status is new. Okay, so let's do that as well. So for that, let me create another class, case manager service. Create another class for that. The name case manager service. Okay, case manager service. So this program is about this requirement. So I'm actually copying this requirement over here. Now, okay, if I ask you about the basic program, so what it would like be, first of all, we will be, we will be firing a query onto case. We will be collecting that inside, we will be collecting that inside a list of case, of course, and then we will be returning that. Fine. So that would be your basic program, right? And convert that into the web service. You first of all require to define one method inside the class. Get this every code what you have written inside the method. The method and the class should have global access specifier, and then depending upon the operation what you are doing, you require to decide
the HTTP protocol. Here also in this program as well, because I wanted to collect the information from the case object. I wanted to get the information from the case object. So my HTTP protocol would be at the rate HTTP get. Right. This is what, and this everything. So let's start with the following the protocol. So the first thing I'm making this is a REST resource. I'm making this class as a REST resource class, as a REST resource, and the REST resource always come up with URL mapping, which is used to give, which is used to give the name, the nickname to your web services. Okay. For this web service, I'm giving the name as case service, case service, and after slash, you require to put one asterisk as well. And your class should always be a global class because it is going to be called from some external resources, right? Global, you can even do like, with sharing as well, with sharing. Okay. Global with sharing as well, what you can write over. Global with sharing. Okay. So, yeah. And then, and then, uh, because we are getting the information, so I'm using the protocol as HTTP get protocol, and then I'm actually creating one of the method, which is again global static, and because this is going to return me list of cases, right? List of case. I'm actually making this list of case. The return type is list of case. Now give the name, and then give the name of the methods to get all new case. Okay, this is my method. Okay. Now inside this, let's form a query. So it would be like list of case, and list of case lst case equals to, now get the data, from this, like select id comma case number, and then status status, and like type, then reason reason, and like origin, and maybe like priority, priority, and maybe subject as well. These are some of the values I'm fetching subject. So we wanted this from where? From the case object. From the case object. Uh, and here I would like to put that condition because we don't wanted to fetch everything. Rather what? Rather we wanted to fetch only those case record whose status is new. Right. Here I will be putting that condition. I'll be putting that condition inside, where the status, should equals to new. Status should equals to, and one thing what we do is like order by case number. So according to the case number, this is going to be this is going to be stored inside this, right? And after this, after this has been covered, I can return your LST case. That's it. Done with it. Done with it. Okay. So now this program, let's call this. Any difficulty up to this? Any difficulty up to this? Yes, come on. Any difficulty up to this? Please tell me that you are getting the code or not. Okay. Yes, Josna, Kiran, Shubham, any difficulty up to this? Josna, Kiran, getting the code, or you wanted me to explain it once again? Please tell me, guys. Please tell me. Yes, Josna, Kiran, are you there? I got what you guys are. Anyways, so okay, we created the web service. Now let me call this. Let me call this from.
pick all this from here. So trying to refresh this workbench. Or rather, let me do one thing. Let's try to pay and paste it. The method again is get method. Let me try to explore this. See, these are the cases, and I mean these are the case numbers like 500. You can see 500 stands for the case. So these are the records that are being fetched from the case object of the Salesforce instance, and they have been listed out to this third-party web service. Now, anyone who is calling this web service, that this name case service, now he can definitely get all these records. He can definitely get all these records, right? Okay. So अब ये था एक इसका, आई मीन दिस वाज द वन ऑफ द थिंग. अब इसी में एक एनहांसमेंट और करता हूँ मैं, लाइक दीज आर सम ऑफ द असाइनमेंट्स फॉर यू गाइस. आप इसको कर लीजिए, ठीक है. नाउ लेट्स कंसीडर वन थिंग. लेट्स कंसीडर वन थिंग. लेट्स कंसीडर this use case: create a web service to get the required information of lead information based on lead ID. ठीक है. मतलब this was the general program. This was just a general program जहाँ पे somebody could request all account record, somebody could request all case record. अभी अपन इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचते हैं. If someone, instead of requesting all of account record or instead of requesting all case record, if somebody wanted to get one a specific information, if somebody wanted to get a specific information, like instead of getting all case record, somebody wanted to get a particular, he's having a case number with him, and he just wanted to get the details of that particular case. If somebody is having an account name with him and he just wanted to get the details of that particular account only, then obviously this is not the way to do that, because this program actually will going to get you all of the information. So whenever if this is your kind of requirement where somebody is actually pushing you, somebody is actually requesting this web service along with one of the account name, that means instead of giving everything, instead of giving back everything, if we wanted to reply with a specific record. So यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए कि where account name equals to Sohail, right? Where account name equals to Shubham, account name equals to Josna. तो तो वो जो अकाउंट नेम वेब सर्विस में से आया है, if somebody is requesting that account name, ये बिल्कुल ऐसा है. दिस इज सेम थिंग लाइक कि जब आप वो पोस्टल पिन कोड एपीआई हिट करते हो, ठीक है, तो वो सारी पोस्टल कौन दुनिया के सारे पोस्टल नहीं देता है. इंस्टेड ऑफ लाइक whatever the parameter you have given to that, like if I'm hitting this API, if I'm hitting this API, तो instead of अगर मैं इतना करूंगा तो नहीं. If I give this like 440024, so instead of getting the information of all thousands of the pin code, what this web service has written me, only the information related to this particular record. So whenever we wanted to get some specific information for any of the parameter that is being supplied. अभी जो दो वेब सर्विस आपने बनाई कि they were not accepting any parameter. Your get account record is not accepting any parameter. Your the second one is like the case number get all new case. This method again is not accepting any parameter, right? And so what is it returning? It's returning the general things, the complete value from your case and everything, whatever, right? But whenever we wanted the web services, if request is going to if the request is coming along with some of the parameter, and you require to respond details related to that parameter only. It is account name equals to Josna, account name equals to like Sohail. We just wanted to give the information of that account only instead of giving the whole information. So how we can handle the params, how we can handle the parameters, what is coming, that is why we are learning something new called as REST context class. So this class, ये जैसे लिखा है कि this class actually is used to establish a secured communication channel between the provider and consumer. This class जो थे REST context class है, इसके अपने कुछ मेथड्स है जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ. पैरम्स करके मेथड है इसके अंदर.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि रेस्ट कंटेक्स्ट क्लास क्या करती है. तो रेस्ट कंटेक्स्ट क्लास विल एस्टैब्लिश अ सिक्योर चैनल बिटवीन योर प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर, ताकि so that the consumer can pass the required input parameters to the provider. Consumer जो भी है, like here, in this example, we were the consumers, हम थे consumer, and we were passing that channel, we were passing that input parameter to the provider. और जब मैंने ये input parameter provider को दिया, तो provider ने मुझे ये सारा response provide करके दिया. So whenever in the request, if the consumer wanted to pass a parameter, so what is that there into the Salesforce? For that we are learning something called as REST context class. For that we are learning something called as REST context class. So this class will establish a secure channel between your provider and the consumer, so that your consumer could pass some of the input required parameters. Okay. Now this class have following inner classes. This class have following inner classes. The first one is REST request. The second is REST response. These are the two inner classes, request and response class. For the REST context, there are two inherited class. There are two child classes. This is a parent class, but it has two inherited classes. It has two child classes, a REST request class and the REST response class. Okay, REST response class. What is the purpose of REST request? This class is used to make a request to the web service. This class would make a request to the web service that I wanted to get this all required information. ठीक है. theory में probably उतने अच्छे से समझा ना पाऊँ जितना मैं practically उसको बता पाता हूँ. ठीक है. So तो अभी क्या होता है कि whenever you are calling, the consumer can pass the required parameter with this REST request. The consumer can pass the required parameter. For example, if I wanted to pass the value of this pin code, तो ये वैल्यू कहाँ पे कैप्चर करेगा, वो इंटरनली कौन सी वेब सर्विस फीचर है. So that web service feature is the REST request class. So the consumer can pass the required parameter to the web service using this particular REST request class. ठीक है. एंड यहाँ पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपको समझना है कि whenever this request, the REST request class is the taking the parameter and it is storing inside one of the database. That database is always in the form of key value, यानी कि map collection, यानी कि map collection. It always store the information in the form of key value. और की वैल्यू पेयर हम जानते हैं कि की वैल्यू पेयर जो होता है मैप कलेक्शन. हमारा जो कलेक्शन होता है मैप कलेक्शन, ठीक है, तो वो होता है आपका की वैल्यू. ठीक है. सो पैराम्स इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो बेसिकली पैरामीटर स्टोर करता है. दिस प्रॉपर्टी कंटेन्स इनपुट पैरामीटर जो भी वेब सर्विस के लिए लगता है, एंड दिस कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, एवरी इंफॉर्मेशन वॉट एवर स्टोर इनसाइड द मैप कलेक्शन. ठीक है. whatever the information that is collected is always collected in a map collection. समझ जाएगा ये, डोंट वरी. एंड देन द रेस्ट रिस्पॉन्स होता है कि जो भी इस रिक्वेस्ट के लिए जो भी रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, दैट वी कैन रिप्रेजेंट इट विद द रेस्ट रिस्पॉन्स. ठीक है. इसका यूज मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिकली जब आपको समझ में आएगा. चलो, सो लेट्स नाउ क्रिएट अ वेब सर्विस वेयर जहाँ पर यूजर विल प्रोवाइड वन ऑफ द लीड रिकॉर्ड की आईडी. यूजर विल प्रोवाइड अ लीड रिकॉर्ड आईडी, जैसे हमने अपना पिन कोड ट्रांसफर किया था यहाँ पे. नाउ इन द सेम वे यूजर गोइंग टू प्रोवाइड वन पैरामीटर इन द रिक्वेस्ट. नाउ व्हेनेवर यूजर इज रिक्वेस्टिंग, इट इज रिक्वेस्टिंग along with a parameter. ठीक है. when the user is requesting, it is requesting along with a parameter. That parameter would be a lead id, and based on that lead id we will going to fire the queries and everything. And this is going to be ये जो भी input parameter वो देगा, that is going to stored inside one of the property called as params. ठीक है. but this is always every request, every the kind of the input parameter जिसको बोलते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट में जो भी इनपुट पैरामीटर आता है, दैट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द रेस्ट रिक्वेस्ट क्लास. इट्स ऑलवेज स्टोर्ड इनसाइड अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज पैराम्स. ठीक है. बस ये थोड़ा सा आप याद रखो तो बाकी चीजें समझ में आ जाएगी. तो यहाँ पे जो भी लीड आईडी वो ट्रांसफर करेगा, दिस पैरामीटर विल बी गोइंग टू गेट स्टोर्ड अलोंग, मतलब इनसाइड वन ऑफ द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज पैराम्स. उसको कैसे यूज करते हैं आओ देखते हैं. सो लेट मी क्रिएट अ क्लास कॉल्ड एज लीड मैनेजर सर्विस, one new apex class with this name, lead manager service. Okay. So what is my use case? This is my use case. So for this use case we are creating. Okay. So let's make first the class to be a REST resource. So REST RESOURC REST resource. Okay.
मुझे नहीं पता। Okay. REST resource, उसके बाद में URL mapping. REST resource URL mapping equals to, now give whatever the name you wanted to give. Example for this, I will give like lead record, lead records service. Okay. With this name, and then give a star. Then give a star. Always give a star. And every your web service is always global. Every web service is always global. Right? This is what. And then now let's create that because we wanted to get the information from Salesforce. So I'm using HTTP GET. Of course, I'm using HTTP GET only. Yeah, because I wanted to get the information from Salesforce. When somebody is submitting a lead ID, when submitting a lead ID. So what I wanted to get this information, right? And then global class lead service. What is the error? Here it is. Okay. So in the URL mapping, it should always start and end with your backslash. And then global class. Okay. Small. Anyway, yeah. Now the HTTP GET. Now let me create that method, any of the method, global, and static. What is going to read? It's going to return only one lead record because based on whatever the user has supplied, we are not giving list of lead. है ना? We will be always returning only one record. एक ही record हम return करेंगे. Based on that कि user ने क्या दिया है आपको lead का जो भी ID दिया है, so उसका नाम देता हूँ मैं get lead record. Get lead record. Get lead record by ID. By ID. ठीक है. With this name, I'm repeating it back. Try to give the naming convention के बारे में बार-बार बोलता हूँ मैं. Try to give the relevant name as far as possible. Right? चलिए. तो because here we are handling, here what we are handling I mean a parameter. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? First of all, you require to define like अभी जो आपको बताया मैंने REST. You require to define something called as REST context class. First of all, because you are handling the parameters. Okay? You're handling the parameters. So that the first thing what you require to define is like REST context. REST context CONTEXT. REST context dot. इसमें देखिए इतनी मेथड्स होते हैं. Request, response. What you want? I wanted to request. I wanted to request. What you want to request? I wanted to request for. I wanted to request for the parameter. I wanted to request for parameter. Don't get request. REST context dot dot. Why it is not taking params? You should take ideally. Let me see. Anyway, and what it is going to return when this, I mean, when I'm requesting this, it is going to return me a map collection. So uh, map of a string, comma string there. Map of string, comma string. Map of string, string. Now give any name for that. For example, like input params. Params Params params. Here missing return state. Okay, that's different. I don't know what's the reason, but request के बाद में params नहीं बता रहा था ये because params is by a default property. Params is a default property. Params is actually a default property. That means all of whenever a web service is coming up with some of the input parameter, okay, and when you are requesting that, when you are requesting REST request, when you are requesting that automatically that parameter automatically gets stored inside your property called as params. This property contains all input parameters supplied by the consumer.
तो वेन एवर कंज्यूमर फॉर एग्जाम्पल इवन ओवर हियर एज वेल, ठीक है, जब मैंने ये सप्लाई किया 440024, that by default this input parameter, was get stored inside one of the property called as params. मतलब हमको ना एडिशनली क्लास में यहाँ पे नहीं देना पड़ता है, we don't require to give this over here, यहाँ पे हमको नहीं देना पड़ता है, राइट, हमको यहाँ पे देना नहीं पड़ता है, we just require to define the method. उसके अंदर में मैं रेस्ट कंटेक्स्ट ले रहा हूँ, रेस्ट कंटेक्स्ट क्लास को कॉल कर रहा हूँ, उसका रिक्वेस्ट मेथड कॉल कर रहा हूँ, एंड रिक्वेस्ट हैव दिस प्रॉपर्टी पैराम्स. तो पैराम्स जो होता है ना, दैट बाय डिफॉल्ट विल गोइंग टू स्टोर दैट इनपुट पैरामीटर जितने भी आते हैं, तो हमको उसको यहाँ पे कॉल नहीं करना पड़ता, क्योंकि क्या होता है, क्यों नहीं करना पड़ता, बिकॉज वेन एवर यू आर राइटिंग समथिंग ओवर हियर, तो यू शुड ऑलवेज राइट इट डाउन अलॉन्ग विद द डेटा टाइप, अलॉन्ग विद द डेटा टाइप. अभी मुझे नहीं पता, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि यूजर जो देगा इनपुट पैरामीटर वो इंटीजर रहेगा या वो स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है, या वो आईडी रहेगा, ठीक है, या वो डेट रहेगा, या वो डेट टाइम रहेगा, या फिर वो एस ऑब्जेक्ट रहेगा, मुझे नहीं पता, because that parameter we are getting it globally, we are getting this parameter globally, and so we don't know the data type, right? तो जब भी आप किसी मेथड के अंदर पैरामीटर देते हो ना, तो उसके साथ उसका उसका जो डेटा टाइप है वो मेंशन करना जरूरी होता है. एग्जाम्पल, अगर आईडी दे रहा है तो आईडी पैराम आईडी ऐसा मैं दे सकता हूँ, बट आई डोंट नो व्हाट द यूजर इज गोइंग टू गेट सप्लाई, राइट. दैट इज द रीजन टू मैनेज दैट पैरामीटर, टू स्टोर दैट पैरामीटर that are being supplied from web services. जब कंज्यूमर हमको जब कुछ कॉल कर रहा है, तो वो एक पैरामीटर साथ में दे रहा है. नाउ टू मैनेज दैट पैरामीटर हम यहाँ पे नहीं देते उसको, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट्स द डेटा टाइप ऑफ दैट पैरामीटर. उसके लिए बाकायदा एक क्लास है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, सब कुछ है. तो रेस्ट कंटेक्स्ट एक क्लास है जिसमें दो चीजें होती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स. तो रेस्ट कंटेक्स्ट से मैंने रिक्वेस्ट कॉल किया, रिक्वेस्ट इज अनदर क्लास, रेस्ट कंटेक्स्ट की रिक्वेस्ट कॉल किया, और रिक्वेस्ट में एक प्रॉपर्टी होती पैराम्स. तो अब जो भी पैरामीटर वेब सर्विस अपने साथ लेके आती है, ठीक है, जो भी पैरामीटर अपने साथ में लेके आती है, दैट इज गोइंग टू बी गेट स्टोर्ड इनसाइड इनपुट पैरामीटर. बट व्हेन दिस पैरामीटर इज स्टोर्ड, व्हेनेवर दिस पैरामीटर इज स्टोर्ड, इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर. Whenever it will store the input parameter, always in the form of key value pair, where key is the parameter name और value जो होती है उसकी वैल्यू जो उसकी वैल्यू होती है जो भी. तो अब अगर आपका पैरामीटर इंटीजर है, अगर आपका पैरामीटर स्ट्रिंग है, अगर आपका पैरामीटर आईडी है, इस ऑब्जेक्ट टाइप है, जो भी है, दैट डेफिनेटली वी कुड मैनेज. और इसीलिए दिस इज द कॉमन क्वेश्चन एवरीबडी आस्क मी कि सर पैरामीटर्स तो हम यहाँ पे देते हैं, तो मैं कहता हूँ ये सबको for every synchronous program we always give this, where why, because we know what is the data type of parameter. Here we don't know. When we are constructing a web service, when we are constructing a web service, देखो, instead of giving like this, I can even give this, मैं दे सकता हूँ ना, ऑफ कोर्स दे सकता हूँ, ठीक है. आई कैन गिव लाइक दिस ऑल्सो, ऐसा भी दे सकता हूँ. तो योर वेब सर्विस शुड हैंडल दैट, your web service should be able to handle that, because we never know what the user is going to give the parameter. It must handle all of the data type. इसीलिए whenever we are handling the parameter, we don't give it inside this particular methods parameter के अंदर नहीं देते. We rather make a use of rest context class. So rest context is a dedicated class that is used to handle all of the context variables, all of the context मतलब values that comes in the form of request and the response as well. So REST context is that dedicated class which is going to manage all your requests and your responses as well. ठीक है. तो रेस्ट कंटेक्स्ट में से मैंने रिक्वेस्ट कॉल किया, और रिक्वेस्ट में से आई हैव आस्क्ड द पैरामीटर्स कि मुझे पैरामीटर सप्लाई करो. whatever the parameter has, the web services come up with whatever the parameter. If somebody has requested, the consumer has requested, so what parameter he has supplied at a time of requesting, just send me that parameter. Now, because that parameter is in the form of key and value, I'm storing it inside what? Inside a map collection. And that map always would be a string, comma string. Because inside a string, comma string, you can store everything. Try to understand that. In the string, comma string, you can store IDs, string, integer, number, special characters, everything that you can store. And that is why the map collection would also be defined. Always, whenever we define this, we define it as a string, comma string. I wanted every value, every type of value to be the key, every type of value to be the value.
So that is why the data type what we select inside the map collection is always string Thomas. And then I have give a name for this collection input params. Okay? So that was the whole story. That was the whole story. Chalo. Now, after this collection has been defined, let me now create your SQL. Let me now create the SQL query for that. So because I'm collecting only one lead record, so I'm storing into one. I mean, this I'm defining one variable for that lead record. Lead record equals to now design your SQL. So what I want to select, for example, ID and the first name and the last name, and then I wanted, for example, email, and then I wanted, for example, company, CMPNY company, and then phone, and then title, and then probably like, phone fax, huh? And then rating also, and then industry, and then annual revenue value. ठीक है, इतना काफी है. So from where? From the lead. Now where ID. ठीक है, अभी हमको we don't wanted to fetch everything. We just wanted to fetch that record जिसकी ID यहाँ पे आई हुई है. ठीक है, पैराम्स में तो दो चीजें हैं. पैराम्स में ID along with जो कुछ भी होगा. But out of that I just wanted to fetch the ID. ठीक है, so I just wanted to fetch the ID. So उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि input params dot get. ठीक है, input params dot get. Get is you आप जानते हो get is a method of your map collection. Get the key. So my key would be here ID. My key would be ID. I just wanted to select the ID form. तो बस इतना ही इंफॉर्मेशन दो मुझे कि मतलब जो पैराम्स में जो आईडी आई है उसके हिसाब से मैं वो पर्टिकुलर आईडी को मैच करता हुआ लीड रिकॉर्ड की वो पर्टिकुलर आईडी को मैच करता हुआ लीड रिकॉर्ड और उसकी इतनी सारी डिटेल्स ये दैट इज वी आर गोइंग टू रिटर्न दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रिटर्न ओवर हियर. तो रिटर्न व्हाट रिटर्न बस लीड और एक ही लीड रिकॉर्ड रहेगा यहाँ पे. ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू ठीक है. So let me now save this code because it was expecting one of the return statements, so it was giving error. Now the error also has been gone. अब एक काम करते हैं, Salesforce में चलते हैं और लीड कोई भी एक लीड रिकॉर्ड उठाते हैं. So Miss Kathy Sender is one of the lead record जिसका ये लीड रिकॉर्ड का आईडी है. ठीक है, सो वी विल बी रिक्वेस्टिंग दिस रिकॉर्ड. हम लोग ये रिक्वेस्ट जो ये आईडी है वो रिक्वेस्ट करेंगे. चलिए, तो यहाँ पर चलो आप यहाँ पर आओ. ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आप जो वेब सर्विस है उसका नाम, वेब सर्विस का जो नाम है मेरा सर्विस का नाम है लीड रिकॉर्ड सर्विस. मैं यहाँ पे देता हूँ सबसे पहले लीड रिकॉर्ड सर्विस. अब इसके साथ मुझे पैरामीटर भी देना है. पैरामीटर क्या है? पैरामीटर है आपका ये वाला आईडी. तो कैसे सप्लाई करते हो आप रिक्वेस्ट के साथ? उसके लिए एक स्लैश और लगाओ यहाँ. ठीक है, और क्वेश्चन मार्क के बाद में आप दो आईडी. आईडी इक्वल्स टू नाउ गिव दिस आईडी इक्वल्स टू दिस. So this is how you form a request. ठीक है, लीड रिकॉर्ड सर्विस इज द नेम ऑफ योर वेब सर्विस. उसके बाद में स्लैश के बाद क्वेश्चन मार्क देना और क्वेश्चन मार्क देने के बाद में बिकॉज वी आर सप्लाइंग आईडी मैं आईडी दिया. आईडी इज अ नेम. ये अगर मैं पिन कोड देता हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर मैं पिन कोड देता हूँ PINCOD मुझे यहाँ पे उसका नाम देना पड़ेगा पिन कोड. तो ये दिस इज द सेम नेम व्हाट आई हैव सप्लाइड इट ओवर हियर. ठीक है, जैसा वहां लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा. तो अगर मैं ऐसा दे रहा तो प्रॉब्लली इट वाज गोइंग टू गिव द मिस्टेक. एरर हो रहा था वहां पे. बट जैसा यहाँ दिया है, जैसा आपने यहाँ दिया है, द सेम नेम यू रिक्वायर्ड टू सप्लाई इट ओवर. ठीक है. अच्छा, ये जब इंटरनली स्टोर होगा तो ये इंटरनली कैसा स्टोर होगा? इट वुड बी स्टोर्ड लाइक यहाँ पे की वैल्यू पेयर है.
यहाँ पे रहेगा उसका नेम, आईडी, और ये जो पूरी वैल्यू आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू ये यहाँ पे स्टोर, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे स्टोर। तो इंटरनली जब ये रिक्वेस्ट करता है इसको, रेस्ट रिक्वेस्ट आपका रेस्ट कंटेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ये इस तरह से स्टोर होगा। तब आईडी यानी ये नेम ये यहाँ पर रहेगा, ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पर इस तरह से। चलो, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सेशन एक्सपायर हो गया है, ठीक है, मैं एक बार फिर से लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करने के बाद में दिस आई रिक्वायर्ड डिलीट सर्विसेज के बाद में यू ऑलवेज रिक्वायर्ड टू टाइप अपेक्स रेस्ट, ठीक है, मतलब अपेक्स रेस्ट, अपेक्स की रेस्ट सर्विसेज व्हाट वी आर कॉलिंग। उसके बाद में हमारी वेब सर्विस का नाम है लीड रिकॉर्ड सर्विस, एंड देन स्लैश, बिकॉज आई वांटेड टू गिव अ पैरामीटर स्लैश, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद में आपको नाम देना पड़ता है ये जो आपने दिया है, यही वाला सेम नेम, आईडी equals to id equals to what is the id, this is the id, so I'm requesting this id now execute this. Okay, so you got this record, Kathy Singer, email, company, phone, title, whatever you are asked, वो आपको डेटा पूरा मिल जाता है। अब इंडस्ट्री इसलिए नहीं कि शायद इसमें इंडस्ट्री होगा ही नहीं, देखो इसका इंडस्ट्री ब्लैंक है, एनुअल रेवेन्यू ब्लैंक है ना, देखो आपने क्वेरी में लिखा है, आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंपनी, फोन, टाइटल, रेटिंग, इंडस्ट्री, एनुअल रेवेन्यू सब लिखा है, बट जो वैल्यू ब्लैंक है, जैसे इंडस्ट्री ब्लैंक है, एनुअल रेवेन्यू ब्लैंक है, तो हमको यहाँ पे नहीं मिलता है, और जिसका वैल्यू है वही मिलता है, बिकॉज ये इंटरनली जेसन में कन्वर्ट होता है ना, तो जेसन में कन्वर्ट होने के बाद में जेसन इक्वल्स टू नल जो आ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड होता है, ठीक है। तो जो फील्ड्स आपने मांगी है वो फील्ड्स का अगर वैल्यू है यहाँ पे, जैसे मोबाइल और फैक्स भी नहीं, आई थिंक मैंने फैक्स भी मांगा है, फैक्स भी मांगा है, बट मेरे को रिस्पॉन्स में फैक्स नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि फैक्स एक्चुअली वैल्यू ब्लैंक है, ठीक है, रेटिंग ब्लैंक है ना। तो जो वैल्यू यहाँ पे नहीं है, जो वैल्यू यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पर भी नजर है। आप यहाँ पे एडिटिंग करो, उसके बाद फिर से रेस्ट सर्विस कॉल करो, तो आपको वो वैल्यू यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। सो दिस वाज लाइक हाउ वी कैन वर्क ऑन दी गेट, हाउ वी कैन वर्क ऑन द गेट। दिस वन मोर प्रोग्राम वो भी ले लेता हूँ, उसके बाद में गेट वाला काम ही खत्म हो जाता है। बेस्ड ऑन द लीड, create a web service to fetch it. Please do, हाँ, by the way please do these assignments, ठीक है, by the way please do these assignment, ये assignment कर लेना। एक प्रोग्राम और है, create a web service to get the required lead information based on lead ID, ये तो हो गया। अच्छा, to fetch the case record based on the priority at runtime, ठीक है। अब ये तो ID हो गया। अब by the way for example, ठीक है, मतलब what is the question, let me show you that। facts, rating, priority कहाँ है यार, name state lead source होता है, first name, last name, by street, title, phone, by street, lead source, ST rating, number of get lead states, priority कहाँ चली, start। हम्म, leads में, केस में देख, केस में देखना चाहिए तो ऑल ओपन केसेस। हाँ, अभी देखो, गलत जगह ढूंढता था, ऑफकोर्स गलत ही लिखा। तो केसेस में एक फील्ड होती है प्रायोरिटी नाम से, ठीक है। अब प्रायोरिटी की वैल्यू जैसे हाई है,
अगर फॉर एग्जांपल अगर यूजर जो है हमको यूजर वांटेड टू सी ऑल दोज केस रिकॉर्ड हुज प्रायोरिटीज हाई, ऐसा कुछ बनाया था कि हमने नहीं बनाया। मतलब जैसे आप यहाँ पे जब बनाते हो, आप एनहांस लिस्ट भी बनाते हो, या फिर हियर यू कैन सी कि दीज आर 1 2 3 4 रिकॉर्ड्स जिसकी जिसकी प्रायोरिटी हाई है। दीज आर सम ऑफ द रिकॉर्ड जिसकी प्रायोरिटी मीडियम है, एंड सम ऑफ द रिकॉर्ड्स विद प्रायोरिटी लो। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर बाय द वे यूजर इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट लीड नंबर केस नंबर है ना डायरेक्टली, if he wanted, if he is giving us the value of this, if he is giving us the value of priority as high, तो वी वांटेड टू सेंड हिम सम मोर रिकॉर्ड्स। एक रिकॉर्ड के बजाय हमको कुछ ज्यादा रिकॉर्ड्स भेजने पड़ सकते हैं, यहाँ पे मुझे लिस्ट कलेक्शन भेजना पड़ सकता है उसको रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि ऑल ऑफ दोज रिकॉर्ड हुज प्रायोरिटीज हाई, रादर ऑल ऑफ दोज रिकॉर्ड हुज प्रायोरिटीज मीडियम, ऑल ऑफ दोज रिकॉर्ड हुज प्रायोरिटीज लो। तो बाय द वे अगर ये इनपुट आ रहा है आप, तो उसको कैसे टैकल करना, वो ये प्रोग्राम आपको पूछ रहा है कि क्रिएट अ वेब सर्विस टू फेच ऑल ऑफ द केस रिकॉर्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड प्रायोरिटी एट रन टाइम। बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी इज समथिंग, द वैल्यू ऑफ द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी 3 वैल्यू रहेगी, या तो हाई या फिर लो या फिर मीडियम। ठीक है, हाई मीडियम लो, इनमें से जो भी यूजर सप्लाई करता है, इनमें से जो भी यूजर सप्लाई करता है एट रन टाइम। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट based on that actually we are supposed to get I mean collect the response and then give it back to the web service from the web service, right? ठीक है, चलो दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम, ये भी निपटा लेते हैं, बिकॉज इसके बाद में फिर मैं दूसरी मेथड्स पे चलता हूँ, जैसे डिलीट और पोस्ट फॉर दैट वी कुड स्टार्ट इट बाय टुमारो। ठीक है, चलो ये एक और प्रोग्राम है, ये भी निपटा रहा है। सो केस रिकॉर्ड सर्विस तो आई ऑलरेडी हैव क्रिएटेड, केस मैनेजर सर्विस मैं क्रिएट किया है। हाँ, एक चीज और है कि एक ही प्रोग्राम में सारा मतलब एक प्रोग्राम में एक ही एचटीटीपी गेट हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं कि आप ये भी प्रोग्राम केस का ही है तो आप यहाँ पे एक और मेथड बना लो, ऐसा अलाउड नहीं है बाय द वे। तो एक मेथड में एक ही एचटीटीपी गेट, एक एचटीटीपी पोस्ट डिलीट जो भी है वो एक ही हो सकती है। तो फॉर दैट एक्चुअली आई रिक्वायर टू क्रिएट अ न्यू क्लास एज लाइक, एक नया क्लास ही बनाना पड़ेगा। केस रिकॉर्ड सर्विस के नाम से एक नया क्लास बना दो। So this we are creating for this particular use case. And the user is going to give the value of priority at runtime, and we require to fetch all of those case records with the specified priority. Okay. So let's make this class a web service, and for that at the rate rest rest resource with URL mapping, rest resource with URL mapping equals to, give this, now give a slash and give the name like case manager service, and then slash, once again slash with the s. So this is the default format, you always require to follow the same thing, right? Make this class as a global class, the hello here global class, and then now let me create the method. So before we create the method, we first of all require to decide what HTTP protocol this method is going to imply. So because this is using a get method, so I'm representing it with the HTTP get. And now give the name global and then global static. And because multiple records जाने वाले हैं इस बार, ये तो आपको समझ गया होगा कि अगर मैं एक प्रायोरिटी देता हूँ, लो हाई जो भी देते हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो ये रिटर्न करेगा, इसलिए लिस्ट ऑफ केस रिटर्न टाइप जो रहेगा, इंस्टेड ऑफ सिंपल एक रिकॉर्ड इट वुड बी लाइक लिस्ट ऑफ केस। ठीक है, लिस्ट ऑफ केस, एंड नाउ गिव द नेम जैसे कि गेट केसेस बाय priority, but get cases by priority. Okay, now same thing rest request rest context, because I wanted to collect the parameter, rest context dot request params. I don't know why this is not listed out over here. What's the reason for that? PARAMS, rest request dot params. I'm requesting the parameter what come along in the web service. ठीक है, एंड आई वांटेड, अभी ये जब पैरम्स आता है तो पैरम क्या होता है, पैरम इज योर मैप कलेक्शन, पैरम इज ऑलवेज अ मैप कलेक्शन, you require to store it inside a map of string comma string.
ठीक है, मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, गिव एनी नेम, लाइक यूजुअली आई गिव दिस नेम इनपुट पैराम्स, ठीक है, यूजुअली मैं ये नाम, चलो। तो इससे मैंने क्या किया, आई कलेक्टेड द पैरामीटर, जो भी उसने पैरामीटर वेब सर्विस अपने साथ लेके आया, दैट आई हैव कलेक्टेड, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दैट पैरामीटर आई विल बी फायरिंग माय क्वेरी, ठीक है। सो लिस्ट ऑफ व्हाट, लिस्ट ऑफ केस because we are expecting multiple case records, so lst case lst case records equals to, now design your query over here. So we wanted like select and then id, case number, then status and priority and type and then origin and then probably like reason subject. So I wanted this all from where, from the case, okay. Now let's put up the condition where what we want, the priority 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 should equals to, dynamic assignment should equals to, from where, from the input params dot get here I will मैं यहाँ पे जो वेब सर्विस में आगे चल के जो नाम दूंगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो आगे चल के नाम दूंगा, मैंने आपको बताया कि ये सेम होना चाहिए हमेशा, तो इसका नाम देता हूँ मैं PRIORITY। जब मैं वेब सर्विस में रिक्वेस्ट भेजूंगा तो उसमें प्रायोरिटी लिख के भेजूंगा, ये सेम होना चाहिए, ये सेम, और इवन ये, और ये जहां तक केस सेंसिटिव भी रहता है, मतलब यहाँ पर आप पी लिख रहे हो ऐसा और वहां पे अगर ऐसा दे रहे हो तो वो मिसमैच बताता है, ठीक है। तो ये सेम होता है हमेशा, ये हमेशा, ये जहां तक केस सेंसिटिव होता है, अगर मुझे एक बार टेस्ट करना पड़ेगा बट मैं 90% श्योर हूँ कि ये केस सेंसिटिव रहता है, ठीक है। तो जो नाम आप यहाँ पे दे रहे हो वही सेम नेम आपका रिक्वेस्ट में आना चाहिए, ठीक है। चलो, एंड दिस इज द सेम थिंग व्हाट वी आर रिटर्निंग, तो आफ्टर दिस हैज बीन डन, रिटर्न व्हाट यू वांटेड टू रिटर्न, return we just wanted to return this case record, we wanted to return this case, that's it, ठीक है। चलो, save this code first of all, and case manager service को कॉल करते हैं, कॉल द केस मैनेजर सर्विस गेट मेथड के साथ में, केस मैनेजर सर्विस कॉल करना है। केस मैनेजर सर्विस अपने साथ क्या लेके आना चाहिए, केस मैनेजर सर्विस जब कॉल होगी, ठीक है, केस मैनेजर सर्विस जो है वो अपने साथ में ये प्रायोरिटी, यहाँ पे आईडी के बजाय मुझे लिखना चाहिए प्रायोरिटी, एंड दैट प्रायोरिटी शुड इक्वल्स टू, अब यहाँ पे तो आपको जो देना है, फॉर एग्जांपल मीडियम, MIDIUM, ये स्पेलिंग है ना, MEDIUM, ठीक है। तो ये मैंने प्रायोरिटी दे दिया, तो ऑल ऑफ दोज रिकॉर्ड जिसकी की प्रायोरिटी मीडियम है वो फेच करेगा, ये एग्जीक्यूट दिस, ये है वो सारे रिकॉर्ड जिसकी प्रायोरिटी मीडियम प्रायोरिटी मीडियम प्रायोरिटी मीडियम, एनी रैंडम प्रायोरिटी, ठीक है। So this is what, like how we can write down the web service. Now we can get the data from Salesforce based on different scenarios. The first scenario was very easy. Get all account, get all cases. That was very simple thing. Then after that, if somebody is trying to enter the parameters के साथ में अगर if you just wanted to send one record, how to send only one record, and first of all how to accept the parameter, because we are not going to give that parameter inside the name of this the name of the method, because अगर method name के अंदर देते हो आप तो you should know what is the data type, right? Or because here we are requesting, somebody else is requesting from outsource, he is actually from the outside world he is requesting, so we don't know कि वो क्या data enter करेगा, we cannot map that request along with the Salesforce internal data type. That is why we are making this request as a global request, and that parameter as a global parameter. For that handling we have something called as REST context, ठीक है, REST context, and REST context अभी मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट बताया है, बाद में मैं इसका रिस्पॉन्स कैसा है, इसका रिस्पॉन्स भी है, इसमें दो चीजें पढ़नी है, REST request.request एंड REST context.response, तो वो अपन नेक्स्ट प्रोग्राम से अपन लेने वाले इसमें।
अभी फिलहाल आपको सिर्फ रिक्वेस्ट बताया, रिक्वेस्ट params, on params is a property that will always return a map collection. So it's always good to define map of a string comma string, because with string you can handle every data type. That is what the benefit with this data, right? So id, key and the value, I'm mentioning both of them to be the string, so that I could manage everything. So this program is handling, like it's returning one record, it's returning only one record, and this is returning multiple records. So that is what, otherwise things are very common, things are very common over here, right? Things are very common. So do this by today itself, and you have so many assignments, you have so many assignments. So probably today evening I'm not going to take class, although I was planning to take the class, but then I have seen that you have almost three questions over here, and then you have almost like three questions over here. So you almost like six question तो यही हो जाते हैं assignments के, जो आज के आज ही करने हैं, आज के आज ही करने हैं, और चार मैंने बनाए, मतलब 10 प्रोग्राम है। ऑल्दो आई वॉज प्लानिंग टू टेक द क्लास, लेकिन ऐसा नहीं करता मैं, ओवरलोड हो जाओगे तुम। तो आज शाम में क्लास नहीं लेता हूँ, कल लेता हूँ, और कल का टाइमिंग मैं बता दूंगा, मॉर्निंग इवनिंग जो भी है, ठीक है। बट ये आज हो जाना चाहिए। ऑल दीज 10 प्रोग्राम शुड बी गेट कंप्लीटेड, डोंट कीप दिस पेंडिंग, प्लीज डोंट कीप दिस पेंडिंग। बाय टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द डिलीट मेथड, डिलीट पोस्ट वगैरह जो भी है, पैच पुट, ये सब बचा है वो करता हूँ। उसके बाद में आपको मैं OAuth ऑथेंटिकेशन, उसके बाद में इंटीग्रेशन खत्म होता है, विल बी स्टार्टिंग डिप्लॉयमेंट। चलो, थैंक यू सो मच।